find the electric field at point P. Okay, find the electric field at point P above the midpoint. Okay, above the mid. Yeah, this is at the mid. Okay, of infinite dimensional sheet as shown in figure. इस शीट की dimension जो है infinite है, ठीक है, इसकी length भी infinite है, okay, and इसकी length भी और width भी जो है वो infinite है, okay. So from ये charges चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, शीट की इनफाइनाइट डायमेंशन, पूरी शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ठीक है. सो चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर इनफाइनाइट डायमेंशनल शीट, ओके, एंड these charges are uniformly distributed, okay, mean this the number of charges at per sheet is the same, per surface is the same, okay, density is the same, okay. So the length is length from minus infinity to plus infinity because we have taken the point at the center, okay, and similarly width is infinite dimension, okay, and we know that what is the formula for E is dE will be K, yes, dQ over R square, R unit vector, yes, okay, and E will be K minus infinity to plus infinity. Please जरा बाहर को जाके करें. अच्छा. So this will be so firstly what is the dQ? Firstly we have to write what is the dQ. For surface charge density I have already proved that that is alpha and beta, and that will be a d alpha d beta, that will be dQ, that is the surface charge density for uniformly charge distribution that will be constant. Uniform mean the charge are constant, that is not varying with the point to point, okay. So dQ will become d alpha d beta, so dE will be equal to K that will be the dE, yes, okay. So if we consider a small patch, very small patch, okay, that patch will be, this will be patch, okay. So if this will be like this patch, okay, one will be along the if you want to consider that that is alpha and beta in the form of alpha and beta or x or y axis, it depends upon you, okay. If you are considering the one length is d alpha, one length is d because they may be along the any axis. If you are interested to take it as y, you may say that that is dy, one is dy and one is okay, sorry. It preference is
depend upon, you may say that that d alpha or d beta, or you may say that this is dy and this is dx. That's up to you. Okay. So आप क्या लेना चाहते हो? अल्फा बीटा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है? अल्फा बीटा. Okay. So फिर ये डी गैमा हो जाएगा. चलो एक्स वाई ले लेते हैं आप अगर ठीक है. सो अगर आप एक्स वाई लेते हो तो देन दिस विल बी दिस. सो this de so this if you replace the alpha with the x and this y, then that will become a dx dy. Okay. Okay. This will be r. R is distance. This is charge distribution sheet. This is point P. The R is distance of point P from this charge distribution. So this will be R. Okay. Okay. If I am considering alpha beta, then I must consider that is delta gamma. Okay. But if you are considering the x-axis and y-axis, then this will be a dx and this will become a dy. Okay. So you may take it as a z-axis. Okay. 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 Okay, and as we have already explained, the R is along the unit, E is along the unit vector, this unit vector. E is along the direction of E will be along this unit vector. So if this is R, E will be along this. So that will mean E will be here. Why it will be here? ये क्वेश्चन आप पूछे थे ना कैसे छोटे आ सकते हैं सर. Why E will be here? Because E is along the radial unit vector. And what is the R? R is distance from the center, from the charge distribution and point. Okay. And it vary from यहाँ और होगा, यहाँ और होगा, यहाँ और होगा. That vary from the point to point. Okay. नहीं पी कहाँ आएगा? पी तो नहीं आएगा. पॉइंट. अच्छा, sorry. Yeah. Okay. Point P. Okay. So, okay. So it mean E will have because this is not x. This is the perpendicular distance and this is horizontal. Okay. So E will have EXI, EYJ and EZK. How? Actually this E is in this because point may be anywhere. This may be here. This is like a 3-dimensional space. Okay. This is E. This will be have this is E. This is plane. This E. This is EX, EY, and EZ. So E will have a 3 components. Okay. EZ. Okay. EX, EY, EZ. ये देखो ना, according to head and tail rule, this is adding this and this is this, and E is summing of EX, EY, and EZ.
This is position vector, this and this, and E is resultant of Ex, Ey, Ez. ये इस तरह है कि मतलब एक कोने में इस तरीके से E, ठीक है। सो अगर मैं इस कोने में चलूँ तो प्लेन में इसके दो एक्सिस बनेंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई। ये इस तरह है कि ये क्या है, आपके पास ये रिजल्टेंट है ई एक्स प्लस ई वाई, ठीक है। तो ये ई जेड उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये उसका प्रोजेक्शन हुआ, ये आया। जैसे मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे कोने पे मैं इस तरह कर रहा हूँ तो इसका प्रोजेक्शन ड्रा किया नीचे, तो आपके पास दो प्लेन बनेंगे ई एक्स एंड ई वाई, एंड देन दैट विल बी हैव अ थर्ड वेक्टर दैट विल बी अ जेड। सो ई विल बी हैव अ थ्री कंपोनेंट दैट विल बी अ ई एक्स, ई वाई, ई जेड। Okay, but this sheet is infinite dimension and that is symmetric, and we have taken the point from the center, and that will be above. Point P is above from the center. Okay, so and charge distribution is symmetric. So along x-axis, the component along x-axis will be also cancelled. Positive axis and negative will be because Ex plus equal to Ex minus with negative sign. So total Ex will be Ex plus minus plus Ex minus, that is 0. And this is sign as plus 2 plus minus 2, that will be equal to 0. Okay. ये वाला, because this is sheet, इस तरफ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा इस तरफ भी उतना ही पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा, लेकिन but direction will be opposite because charge distribution is uniformly distributed and the length and width length is the same. ये जितना पीछे x axis के जितना y जितना ये पीछे जा रहा है, because the point from the center, okay, because it is center point, so the field due to this charge and field due to this charge, that will be a same. So that will be cancelled. The component along the x-axis will be cancelled. Plus x will be cancelled. So this will be a plus and minus will be a same. And because magnitude is same, so if I will put the value that Ex plus minus Ex plus, that will be a 0. ओके, हाँ नेट आ रहा है, नेट विल बी 0, ठीक है सर। ये ऊपर जो ये Ex प्लस Ex माइनस दोनों जो है ना, X माइनस की है ना यार, Ex और टोटल क्या है, Ex प्लस एंड Ex माइनस। दूसरा स्टेप है ना, आपने एक प्लस में लिखा है कि नेक्स्ट में लिखा है, दोनों मैग्नीट्यूड है ना, हाँ तो एक जो Ex प्लस है और Ex माइनस है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है, विद नेगेटिव के साथ, क्योंकि वो एक प्लस एक्सिस के साथ है, एक माइनस एक्सिस के साथ है। तो ये दोनों क्या, एक ही डायरेक्शन इस तरफ होगी, एक ही डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये Ex प्लस है, ये Ex माइनस है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, कोई भी इसको कह दो, ये C सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, O सेंट्रल पॉइंट है, इसको अगर मैं O कहता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस है यार, माइनस, ये Ex प्लस में E माइनस, ये टोटल Ex है, इसमें प्लस वाला और माइनस वाला ऐड किया, इन दोनों की वैल्यू जो है ना, ये जो चूंकि अपोजिट है, ये माइनस वैल्यू पुट की, Ex की E माइनस एक्स की वैल्यू डाली। यार इसको मुझे तो बच्चों की तरह बताना पड़ेगा। Ex माइनस किसके बराबर होगा, माइनस Ex प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, और ये जो यानी ये देखो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली the Ey will be Ey plus Ey minus, okay,
and sin EY plus minus EY plus that is 0. So total EY will be also a 0. Okay, got it? So it means E will be only EZC. ओके, डायरेक्शन का जिक्र आना था। तो ये सारे क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गए। सो हमारे पास रह क्या गया, दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी, E विल बी इक्वल टू EZ K। एक्स और वाई कैंसिल हो गया ना, ये क्या है? Z में तो कोई है ही नहीं ना, Z एक्सिस लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आपने किसके लॉन्ग लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई Z जो है, ये जो है ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। ये सारे जो है, ये जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात थी, ये सारे जो है ये क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो रहे हैं ना, ये सारे ऐड होके क्या होंगे, ये सब ऊपर, बाकी सब की डायरेक्शन अपोजिट है। Z की जो है वो सिर्फ अपवर्ड है, तो ये क्या आ जाएगा EZ, ये आपके पास कंबाइन। हाँ फिर नहीं होना था, फिर तो नहीं Z तो हाँ सारी चीजें चेंज हो जाती, ठीक है, वो भी करेंगे आगे आप, ठीक है। तो ये दिस विल बी हमने सेंट्रल पॉइंट इसीलिए फॉर सिंप्लीफिकेशन कंसिडर किया, ये आपके पास आ गया EZ, ठीक है। तो ओके, but what is the EZ? Now question, what is EZ? EZ क्या है, जानना चाह रहे हो? अच्छा, what is the EZ? जैसे पिछले किया था, ठीक है, this is E, this EZ, that is E sin theta। सर जो ये नीचे वाला अपने सेट की जो हम एक्स सकते हैं, जो एक्स के साथ भी नीचे ना, ये तो नेट जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने EX लिखा, फिर यहाँ भी नेट लिखना पड़ेगा, फिर हर जगह वहाँ लिखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर है, EX मीन है ही नेट, ठीक है। तो वो मैंने प्लस और माइनस को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो ये E sin थीटा है, ठीक है, so that will be a sin theta, and sin theta, and what is the sin theta? ये नजर आ गई, समझ आ गई, ये E है, ये Z कंपोनेंट है, ये अगर थीटा है तो ये that will be a EZ sin theta, okay, okay, and from R Z will be equal to R sin theta, तो sin theta होगा Z over R, yes, ठीक है, Z over R, okay, so ये ट्रायंगल बंधन बन रही है, ये वाली आपने बनाई है मिड पॉइंट से Z, this is angle theta, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, because angle between, I have already explained, the angle between two parallel lines will be, y theta is same, ये पेपर में आ सकता है, y theta for E and y theta, I have already explained why this theta is the same, because these are the parallel to it, the angle between the parallel two lines, okay, and this R is along the R, okay, so the same line is intercepting two parallel lines, angle theta will be
same for same intersecting line for same line intersecting two parallel lines. Okay, so that's why here this is also theta and this is also theta. Okay, here is theta. That is the reason for that. Okay. Okay. E was Ez. Okay. Ez is sine theta. Okay. Sine theta is, what is the sine theta? Z over R. R. Okay. This will be this. Okay. Angle will be same for same line intersecting. Hanji. Intersecting two parallel lines. Okay. 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 So this is D, and so you will take the Z component. That will be DE will be actually E sine theta. Okay, DE sine theta. DE is K rho dx dy over r square. Sine theta is Z over R and K unit vector. Okay. When we integrate, so E will be K, Z will be constant, rho dx dy over R square. R cube. Z rho dx dy and K unit vector. Okay. So it is minus infinity to plus. Length is minus infinity. There are two integrations. Okay. And as E has three components x, y, z, R vector is also has three components x, y, and zk. Okay. वो कन्वर्ट हो गया ना, सिर्फ z कंपोनेंट है ना, यूनिट पर खत्म हो गया, k यूनिट, बाकी सब जीरो हो गए. ठीक. You are right. Actually, this r unit vector is converted into the k unit vector because I unit vector is 0. R unit vector has a three component x, y, z. X and y component unit vector x and y component will be a 0. Only the k component will be remain. That's why I have taken. That's why DE sine theta. Why that is because DE is equal to DE Z
sin theta. Okay, that's why I'm keying on. So that's all. Now it's okay. Okay. Oh sorry, यहाँ पे sin theta नहीं आएगा. ये था. ठीक है, dEz था और ये फिर उसकी वैल्यू डाल. ठीक है. हाँ इंटीग्रेशन. सरफेस जो है, सरफेस में वेरिएशन है ना, प्लेन में पहले आप कंसिडर कर रहे थे लाइन के अलावा, तो एक इंटीग्रेशन, सरफेस के लिए 2 इंटीग्रेशन, वॉल्यूम के लिए 3 इंटीग्रेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. एंड आई थिंक अगर आप कॉलम लॉ को पढ़ोगे तो वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी मैंने आपको बताया था कि माइनस इन्फिनिटी टू शीट की, ये शीट के अलावा है ना, इंटीग्रेशन इज अलोंग द शीट माइनस. तो एक्स एक्सिस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस एंड वाई एक्सिस भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस. ऐसी नहीं थी शीट, मैंने अब कर दी है कि दोनों जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस. सो आर क्यूब r square will be r dot r, that will be x square plus y square plus z square, and r cube will be x square plus y square plus z square 3/2. I have already explained why. Okay, so E will be kz minus infinity to plus infinity minus infinity to plus infinity. One you may say that for x, one is for y. Okay. Okay, and यहाँ भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है. ठीक है. Okay, so rho dx dy over r cube, r cube instead of r cube, that will be x square y square plus z square 3/2. And okay, okay. कौन सी ये 3 कंपोनेंट है. आर स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, एक्स का एक्स के साथ. ठीक है, वाई. ठीक है, और आर किसके बराबर आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट आर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 3 पावर. ये पिछले लेक्चर में भी किया था. ठीक है, तो अच्छा, now kz किसी एक को आप ए ना पहले सॉल्व कर लो, x को या y को, इट्स अप टू यू. किसको पहले सॉल्व करना चाह रहे हो? पहले x को पहले सॉल्व कर लें. चलो, y माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dy एंड x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जिसको बाद में सॉल्व करना उससे पहले इधर ले जाते हैं. dx रो इज कांस्टेंट, हमने यूनिफॉर्म लिया है, रो भी बाहर आ जाएगी. रो कांस्टेंट है ना, और के z sigma, sorry, not rho, sigma. Okay, dx x square plus y square plus z square, that is 3/2. We are integrating with respect to x,
Z is already constant. Y जो है हम इंटीग्रेशन x के y का हम बाद में कर रहे हैं, तो let's assume that y is constant. Okay, let R naught is y square plus z square, and that is because the distance is not changing. एक वक्त में पॉइंट जब होगा, अगर x एक्सिस को कर रहे हो तो y एक्सिस जो है वो फिक्स हो जाएगा. ठीक है, अपने पॉइंट को फिक्स. If I am considering that is constant, I consider that is R naught. Okay, so the E will become K Z sigma minus infinity to plus infinity dy, that is minus infinity to plus infinity, that is y, and that was x, and that become dx over x square plus r naught square. Okay, and that is 3/2 because we have considered this is constant. Okay. Sir, ये sigma और rho देते हैं. Sigma का प्लेस में rho का प्लेस में. Sigma is surface charge density when you are considering the plane sheet, two-dimensional plane, and rho we will take rho when we are considering the volume density, charge per unit volume. If the charge is distributed on a volume, and linear charge distribution when charge is distributed along the line. Sir, ये sigma rho जैसे उनको constant है ना. It is not always constant. In our case, we have considered that is uniformly distributed. If you will watch the complete lecture on the Coulomb law, then you will definitely you will get what is the meaning of that. Actually, this is the charge. This is surface charge density, means charge per unit surface. Linear charge density means charge per unit line length, and volume charge density means charge per unit volume if the charge is distributed on the volume. Because here the charge is distributed on a sheet, that is two-dimensional. Sheet means it has no thickness. Okay? It has only the length and surface. It has only surface, length and width, not a volume. Oh, sorry. Length or height? We don't have a height, length and width. That is like a sheet. Sheet is always a two-dimension. Okay. So this formula is like I have already solved in the previous exercise. To solve this integration, we have to consider that is the tan theta. Okay, on x is equal to solve this integration. How we solve this integration? We not consider minus infinity to plus infinity dx over x square plus r naught square 3/2. Okay, let x equal to r naught tan theta, as I have already in previous exercise. Okay, so x will be r naught and dx will be r naught secant square theta d theta. Okay. Okay, this is x. X equal to 0 implies that theta will be tan inverse of x over r naught, and that will be also a 0. Okay. Okay, that is also a 0. Tan inverse of 0 is 0, so that will be 0. X equal to infinity. Sorry. Shit. Last time we have 0 to plus infinity 2 times dx, sorry, x square plus r naught square 3/2. Okay,
that is 2 double. You have already explained in the previous lecture. Okay. Okay, so R नॉट वाई स्केयर R नॉट ही तो लिया ठीक है, जैसे ये पीछे किया था पहले भी ऐसे किया था, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई? ये पहले किया हुआ यार, पहले किया थीटा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी दैट विल बी ऑफ π/2, ठीक है। नहीं नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पीछे भी किया था वो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपके पास dx ओवर इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस और नॉट स्क्वायर 3/2 दैट इज इक्वल टू आ गया 0 to infinity, that will be equal to dx will be r naught secant square theta d theta divided by r naught square tan square, r naught हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं सॉरी भी ले लें, r naught square प्लस r naught square 3/2 0 to π/2 r naught square कट गया, r naught 3 r naught ये आ गया ना 0 to π/2 secant square theta, ये क्या है tan square plus 1 that is also secant will be secant square theta d theta, this 2 will be cancelled with this, 1 by secant theta is cos 1 over r naught square, this was r naught, this was a common r naught cube, and this will be what is the integration of 1 by secant is 0 to π/2 is cos theta d theta, cos derivative is minus sign but integration is sine, okay. So sine π/2 minus sine 0 0 so 1 by r naught square, that was the result। यार ये पीछे भी किया है, मुझे तो ये समझ, तो पीछे आपको समझ आ गई, यहाँ नहीं आई? अच्छा अच्छा, ये आ गया, नहीं पूछना कोई बात नहीं है, ठीक है, ये आ गया r naught आ गया, ठीक है। तो अगर ये हम 2 का ले रहे हैं तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ जो है ये 2 आ गया, और यहाँ ये 2 आ गया, और यहाँ भी ये 2 आ जाएगा, और यहाँ भी ये 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 2 आ जाएगा अगर हम डबल वाला पूरा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास वो आ जाएगा, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, it will be equal to kz to minus infinity to plus infinity dy over r naught
square. Yes. Okay. And when we convert it into the k unit vector, okay. When we convert, this will become a 4, okay. 4kz. This will be 0 to plus infinity. Yes. Yes. ठीक है. dy over r naught square k unit. Okay. Okay. But r naught is r naught square is y square plus z square. It is not constant. हमने उसके लिए, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ x के हिसाब से था. Now we are integrating with the y. Now this is not a constant. Z constant होगा. Yes, you are right. Z will be only constant. Okay. This will be constant. Oh, sorry, not constant. Not constant. ठीक है? Because this is varying. Okay. So this will be a 4kz e 0 to infinity dy over y square over z square. So how we may integrate it? हाँ जी, y के लिए. Same way. Okay. Let y square is z square, because z is constant. Y is z tan theta. Dz is dy is z secant square theta d theta. Okay, so E will be 4kz 0 to infinity. Sorry, 0 to pi by 2, as I have already explained. Okay. Secant square theta d theta z square tan theta plus 1. Yes, I have taken the common. Y square is equal to z tan, z square common ले लिया, tan square z common ले लिया 1 आ गया. ठीक है. Okay, this z square will be cancelled with this z square. So 4k 0 to pi by 2 secant square theta over secant square theta d theta. Yes, secant square cancel हो गया. ऐसे ही है ना, secant square and 4k pi by 2 आ गया. सर आपको क्या जो आपने z स्क्वायर कटिंग किया फर्स्ट है, इसके साथ tan स्क्वायर भी क्या प्लस 1 था. ये कैसे है यार? वैल्यू डालिए y स्क्वायर की z स्क्वायर tan थीटा, क्योंकि ये हमने लिया है. ठीक है, z कॉमन ले लिया है तो tan स्क्वायर प्लस 1 एंड 4 2 पाई, सॉरी ये क्या था, k क्या था? पाई बाई 2 सिग्मा. ओके, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया और
ये आ जाएगा। अगर ई भाई ई की मैग्नीट्यूड, अगर ई वेक्टर निकाल रहे हैं तो ये ए की, ठीक है। तो दिस विल बी रिजल्ट। और ये आपने याद होगा कैपेसिटर में भी यही रिजल्ट आता है, वो भी इनफाइनाइट डिमेंशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, उसमें भी ठीक। तो दिस विल बी अ रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है।